A stormy start to the first day of the monsoon session of Parliament. Both Rajya Sabha and Lok Sabha witnessed heavy hangama by the opposition as soon as the Prime Minister stood up to introduce the ministers who recently got inducted into the Council of Ministers. And they tried to block his speech, demanding debate in the House. Reacting to the ruckus, the Prime Minister slammed opposition's behaviour, said that he was expecting a peaceful environment. His large number of women MPs, Dalit, tribal MPs with farmers, OBC backgrounds became ministers this time. But unfortunately, some opposition leaders probably did not like this, is what he says. Rajnath, all right. महिलाएं जो मंत्री बनी हैं, उनका परिचय हो रहा है। वो कौन सी महिला विरोधी मानसिकता है कि जिसके कारण इस सदन में उनका नाम भी सुनने को तैयार नहीं है, उनका परिचय भी कराने को तैयार नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत बड़ी मात्रा में शेड्यूल्ड ट्राइब के Rajnath Singh and Piyush Goyal also attacked the opposition. The opposition is now cornering the government over a host of issues that India has faced, like COVID mishandling, fuel price hike, the inflation, farm laws, the slow pace of vaccination in the country, and a decline in the economic growth of India. There are several notices of adjournment demanding debate that have been sought by the TMC, the Congress Party, RJD, and AAP. Let's see how the entire action unfolded in the Rajya Sabha. माननीय सभापति जी, आपने मुझे मंत्रिमंडल के नए सदस्यों का इस सदन में परिचय कराने के लिए आदेश किया है। आज एक ऐसा अवसर है इस सदन का जब इस देश के गांव के Nothing shall go on record other than the Prime Minister. परिवार के बच्चे आज जब मंत्री बनकर के इस सम्मानीय सदन में उनका परिचय हो रहा है, तो कुछ लोगों को बड़ी पीड़ा हो रही है। आज इस सदन में महिलाएं जो मंत्री बनी हैं, उनका परिचय हो रहा है। वो कौन सी महिला विरोधी मानसिकता है कि जिसके कारण इस सदन में उनका नाम भी सुनने को तैयार नहीं है, उनका परिचय भी कराने को तैयार नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत बड़ी मात्रा में शेड्यूल्ड ट्राइब के हमारे सांसद साथी मंत्री बने हैं। हमारे आदिवासियों के प्रति ऐसी कौन सी इनके प्रति रोष की भावना है कि वे आदिवासी मंत्रियों का परिचय इस सम्मानीय सदन में हो, ये भी उनको पसंद नहीं आ रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन में बहुत बड़ी मात्रा में दलित मंत्रियों का परिचय हो रहा है। दलित समाज के इन प्रतिनिधियों का नाम सुनने को ये तैयार नहीं है। ये कौन सी मानसिकता है जो दलितों का गौरव करने को तैयार नहीं, आदिवासियों का गौरव करने को तैयार नहीं, किसान के बेटे का गौरव करने का तैयार नहीं। ये कौन सी मानसिकता है जो महिलाओं का गौरव करने को तैयार नहीं? इस प्रकार की विकृत मानसिकता पहली बार सदन ने देखी है और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, आपने परिचय कराने के लिए जो अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। लेकिन माननीय सभापति जी, मंत्रिमंडल में नवनियुक्त सदस्यों को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस समझा जाए। All right, we're getting information coming in that the Lok Sabha has been adjourned till 3:30 p.m. That's the latest information just trickling in at the moment amidst all the ruckus that one is witnessing in the lower and the upper house of the Parliament. We're getting also a few reactions coming in from a few ministers. Take a look. आज सदन के पहले दिन जिस प्रकार से
विपक्ष के माननीय सदस्यों ने व्यवहार किया उसको हम कंडेम करते हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आज दोनों सदनों में देखने को मिली और एक परंपरा जो वर्षों से आ रही है। शायद पहला सेशन जब पार्लियामेंट का शुरू हुआ उस समय की परंपरा आज पहली बार सदन में तोड़ी गई। प्रधानमंत्री संसद में आकर सबसे पहले सदन की कार्रवाई प्रारंभ होते ही अपने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का परिचय कराता है और पूरा सदन शांतिपूर्वक से प्रधानमंत्री की बात सुनता है और सभी जितने भी मंत्रीगण होते हैं उनका परिचय हासिल करता है। यह एक हेल्दी ट्रेडिशन यहाँ का रहा है। लेकिन मैंने पहली बार अपने 24 वर्षों के संसदीय जीवन में यह देखा है कि इस परंपरा को इस बार संसद में तोड़ा गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी कांग्रेस ने किया है वह दुखद है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। या हमारा नेशनल सिक्योरिटी खतरे में है, किसी का कोई प्राइवेसी नहीं है, सर्विलेंस स्टेट चलते हैं, जरूर उठाएंगे ये मुद्दा। किसानों का मुद्दा सबसे पहले आपने उठाना है और बाकी सारी जो ऑपोजिशन पार्टी हैं उनको साथ लेके आपने कोई भी कमी नहीं छोड़नी, किसी हद तक जाना पड़े। और किसान जत्थेबंदियों ने भी यही बोला है, भी आपको किसी हद तक जाना पड़े हम जाएंगे। ये विश्वास किसानों को और किसान जत्थेबंदियों को दिलवाते हैं। Abhishek Bhalla is joining us from Delhi, reporting live on all the latest developments. Abhishek, rather very stormy start to the monsoon session of the Parliament. If you could give our viewers a bird's eye view of all that transpired in the upper and the lower house of the Parliament, alongside the protests that are taking place outside the Parliament too. Notices given by Chaiti, whatever happened was on the expected lines, but the government has expressed their displeasure by stating that this is perhaps for the first time in parliamentary history when the Prime Minister was disrupted and not allowed to introduce the new members of the Council of Ministers after the cabinet reshuffle that has happened. When the Prime Minister started to speak, he was interrupted, and there are a host of issues that the opposition has listed to attack the government. COVID mismanagement is one of them, farmers' protest is another one, and obviously yesterday evening's list of people who've been snooped upon is one more ammunition for the opposition to attack the government. What we've seen is a glimpse of what's expected in this stormy parliament session that is to continue for another month from here onwards. So these kind of scenes can take place in days to come as well. ओबीसी समाज से है, बहुत बड़ी मात्रा में उनको मंत्री परिषद में मौका मिला। Report just coming in. Rajya Sabha has been adjourned till 3 p.m. and as we reported earlier, Lok Sabha has been adjourned till 3:30. Abhishek Bhalla getting us the latest as far as the political showdown is concerned. You've got former NDA ally Shiromani Akali Dal leaders who are staging a protest outside Parliament over the farm laws, demanding them to be scrapped for the benefit of the farmers. Take a look. गवर्नमेंट की क्या मजबूरी है कि वो किसानों की नहीं सुन रहे हैं? ना किसान समझ सक रहे हैं, ना कोई पार्टी समझ सक रही है। आज सबको बेनकाब होना पड़ेगा। जो किसान के हक में खड़े हैं उनको खड़े होके इस सेशन में सरकार को मजबूर करना होगा कि किसानों की मांग मांगी जाए। जिस किसान करके हम सब संसद में पहुंचे हैं, वो किसान 8 महीने से संघर्ष कर रहा है, 500 की खुदकुशी कर चुके हैं, लेकिन आज तक ना ओबिचुरी में उनका मेंशन किया गया है और ना ही काले कानून वापस किए गए हैं। तो हम पूरा दबाव बनाएंगे कि ये काले कानून वापस किए जाए और किसान की मांगे मानी जाए। देश के किसान इंसाफ चाहते हैं, काले कानून वापस चाहते हैं। आज हमने एडजॉर्नमेंट मोशन दिया है। हम चाहते हैं कि सारी पार्टीज एक मुठ होकर सेंटर सरकार, मोदी सरकार के खिलाफ खड़े हों और ये प्रेशर डालें कि ये कानून वापस लें, क्योंकि ये काले कानून से देश का किसान तबाह हो जाएगा और ये समझ नहीं रहे मोदी सरकार। Big political showdown after reports that phone hacking software Pegasus was used to target high-profile people in the country. According to global and Indian media reports, phones of 300 Indians have been hacked. That allegedly includes 40 journalists, 2 serving ministers of the ruling government, 3 opposition leaders and 1 judge.
The reports allege that many governments in the world, including that in India, are spying on popular personalities through a special software named Pegasus, which is made by Israel. Opposition is meanwhile furious over the reports. Rahul Gandhi has taken a jibe at the Prime Minister Narendra Modi, saying that we all know what he has been reading. Many opposition leaders are now up in arms demanding answers from the government. The government has rejected the reports terming Pegasus hack a phishing expedition. It said that the government is committed to right to privacy and that there is no truth behind government surveillance claims. Thank you. ऑपोजिशन पार्टीज का कहना है कि स्नूपिंग के मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए क्योंकि ये इसके विषय में सरकार ने अपना वक्तव्य पहले ही दे दिया जो आप सबके पास उपलब्ध है. धन्यवाद. My view is that this Pegasus issue is of a major national seriousness because we're looking at something which apparently the software can only be purchased by governments, and clearly our own government has said they have not done anything unauthorized, but hacking is illegal in our laws. To my mind, a thorough independent judicial inquiry or indeed an inquiry by a strong parliamentary committee could well be the way forward. But my view is that an inquiry must be done. We cannot just brush it under the carpet. पत्रकारों के नाम है, सिविल राइट एक्टिविस्ट के नाम है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के नाम है, पॉलिटिशियंस के नाम है, और तो और छोड़िए. चर्चा ये है कि मंत्रियों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों के भी नाम है. तो आप करना क्या चाहते हैं? ये लोकतंत्र का चेहरा नहीं है. ये आप एक अथॉरिटेरियन स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं. आपको अपने आसपास के लोगों पर भी शक है. While we look at this whole expose that government was snooping or any government of any country or state was snooping on this journalist, I think we must not take it at a face value and we must investigate it thoroughly because, you know, the whole premise of this government doing this surveillance is based on one single NSO's claim that they sell their technology only to the governments. There's breaking news coming in. Punjab Chief Minister has invited all Congress MPs and MNAs for lunch on 21st of July, but an invitation has still not gone out to Navjot Singh Sidhu, and as you already know, there's been a rift between the two. There's a factionalism that the Congress party has been witnessing. So Captain Amrinder Singh has not invited Navjot Singh Sidhu for this particular lunch, but has invited all the Congress netas, including MPs and MLAs. Manjeet now joins us for the latest. Manjeet, it's very, very clear that there is factionalism in the Congress party, and now with Sidhu's appointment as the PCC, obviously Captain Amrinder is not very happy about it. It's very evident, although we are still waiting for an official reaction. Him not inviting Navjot Singh Sidhu for this particular lunch says more than words can speak. Yes, Chetty, Navjot Singh Sidhu's elevation as Punjab Congress Committee chief can spark dissidents in the party once again. We can see that now Chief Minister Captain Amrinder Singh is inviting all MPs and MLAs for a lunch, and Navjot Singh Sidhu has not been invited. Even sources telling us that Navjot Singh Sidhu can try to meet Chief Minister Amrinder Singh today, but there is no word from Chief Minister's office or from Captain Amrinder Singh. Navjot Singh Sidhu has been meeting various Congress leaders. He also paid a visit to the Punjab Congress Committee Chief Sunil Jakhar and met him. He also met a number of leaders as well. We are at the residence of one of the disgruntled Punjab Cabinet Ministers, Tript Rajinder Singh Bajwa, where Navjot Singh Sidhu is expected to come anytime. He has met a couple of ministers earlier. He also met one of the working presidents, Mr. Nagara. So Navjot Singh Sidhu is leaving no stone unturned to impress the Congress leaders. He also meeting common people. He also tweeted in the morning saying that he's a humble Congress leader. But as far as Captain Amrinder Singh is concerned, Captain Amrinder Singh has demanded a public apology from Navjot Singh Sidhu if he was keen to meet him. But so far Navjot Singh Sidhu has not apologized. Remember, Captain Amrinder Singh has raised this issue before the party high command, saying that during the past 2 months, Navjot Singh Sidhu had made 150 tweets which were derogatory in nature. Navjot Singh Sidhu had attacked his own government, that has sent a wrong message among the masses. So
Manjeet, thanks for getting us those updates right there. Moving on now, Kerala government's move to relax COVID curbs for 3 days for Bakri Eid was not stayed by the Supreme Court. While hearing a plea seeking immediate end of the relaxation of COVID norms, the Supreme Court has not imposed a bar on the relaxations for Bakri Eid by the government. The apex court has said that all states must be vigilant and not become complacent. The top court has also asked the state government to file a response today. The matter is going to be heard again at 1 p.m. tomorrow. The move may get enough leeway for the state government as it had given relaxations for Bakri Eid on 18th, 19th and 20th of July. While hearing, the Supreme Court has once again reminded the authorities on the importance of Indian citizens' life and how it should be given paramount importance. The state is consistently recording nearly 14,000 cases daily. The Indian Medical Association has warned the Kerala government multiple times over easing of COVID restrictions. In a strong statement, the doctors' body has said that it is pained to see the situation in Kerala. Kerala has vaccinated over 50% of adult population against COVID with at least one dose of COVID vaccines. In a big respite, residents of Delhi NCR reeling under intense humidity woke up to a rainy morning. Finally, after that heat wave in Delhi, rain slashed parts of Delhi NCR and adjoining areas including Noida, Gurugram and Faridabad. Due to incessant downpour, waterlogging was reported from low-lying areas, creating problems for commuters. Various roads and streets of national capital were flooded. Waterlogging forced people to wade through knee-deep waters. Vehicular movement has also been affected. The bus was also seen stuck in the water, for a long period of time in Mahipalpur area. We're getting you that visual on your screen at the moment. If you see, in many places, traffic has been diverted. Delhi recorded 70 millimeters rain in the last 24 hours. Areas like Palam saw 100 millimeter rainfall. Safdarjung 69.3 millimeters. Lodhi Road 58 millimeters till 8:30 a.m. According to the weather department, Delhi and its adjoining areas are going to be witnessing thunderstorms with moderate to heavy intensity rainfall today. इस वक्त मैं दिल्ली के पुल प्रहलादपुर अंडरपास पर मौजूद हूं और आप देख सकते हैं जो ये पूरा अंडरपास है पूरी तरीके से बंद हो चुका है। भारी बारिश की वजह से जल जमाव हो गया है और नज़ारा ये है कि सड़कों पर इस भारी बारिश की वजह से सड़कों पर जो कूड़ा है वो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा और अंडरपास पर जो एक प्राइवेट बस है वो पूरी तरह से फंस चुकी है। हर साल बारिश की वजह से इसी तरीके से पुल प्रहलादपुर जो अंडरपास है वो पूरी तरह से डूब जाता है और अगर आप देखें तो हमारे घुटनों की तरफ पानी है। दूसरी तरफ अगर आप देखें जो बस स्टॉप है वो भी पूरी तरीके से डूब चुका है। एक ट्रैक्टर वो जो यहाँ से गुजरने की कोशिश कर रहा था वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। साल यही नजारा होता है पुल प्रहलादपुर अंडरपास का। जो पूरी सड़क है वो दरिया में तब्दील हो चुकी है। अंडरपास पूरी तरीके से बंद हो चुका है। यहाँ पर यातायात जो है पूरी तरह से बाधित है।